Hmm. So today we are going to take with the first program of batch programming. Okay. So before that, let's understand what is the format of a batch programming and how we exactly write it down. So in the last lecture we have discussed, whenever you wanted to make a class to be a batch class, whenever we wanted a class to be a batch class, whenever we wanted a class to be executed as a batch class, there are certain prerequisites. The first thing, the class should be a global class. Whenever we make a class to be a batch class, it cannot be public, it cannot be private. These are the two things. Okay, yes. No, I already have started recording. Recording is already started. Don't worry. So, yes, recording is started. So, whenever a class needs to become a batch class, the first thing is like the class should be a global. The access specifier of that particular class should only and only be the global, because see, batch classes are always executed out of the organization. Try to understand this. Every such class with a scope as global is going to be executed out of organization. Whenever there is any such code which needs to be get executed out of organization, that requires to be make as a global, दो इट इज अ क्लास, दो इट्स अ मेथड. अगर वो कोई क्लास है या फिर कोई मेथड है, ठीक है. इफ इट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वी आर रिक्वायर्ड टू मेक दिस एज अ ग्लोबल. We are required to make the class or whatever the method is as to be a global class, global method. So this is the first thing. The second thing, if we wanted this class to be to be get converted into batch class, this class should implement one of the interface, compulsory interface, and that is database.batchable. Database.batchable interface. This is one of the interface. Interface is a kind of add-on code. Interface is something what we usually add inside our coding. Interface basically represent one additional files, one additional kind of code that we are going to attach this with our programming. So whenever we make this arrangement, whenever we wanted some additional code to be get attached to the existing code, that there's a keyword called as implements. और यही lightning में extend के नाम से आता है, extends. ठीक है. Here the keyword is implements. Okay. So the first thing, global class, any class name, implements database.batchable of S object. This is my class. Now, your batch class consists of three methods: start method, execute method, and finish method. Start method, execute method, and finish method. These are the three methods. Now, we need to understand the format of this, and this is something, this is something they will ask you to write down this in the interview. This is something they ask you to write down in the interview. Let me copy and paste it over here. 201. This is something they will ask you to write down in the interview. You need to write down the format of batch class. This is the batch class format. This is the format of batch class. What is that? The first thing, global class name, which implements database.batchable of S object. Now every batch class consists of three methods: start, start and execute and finish. Now the scope of these three methods are always global. Class is also global, class is also global, and these methods are also global. Start method is also global, your execute method is also global, and the finish method is also global. So every method along with the class having the access specifier has to be what? Global. Now start method. Now see, the start method, okay, the start method and this execute method and the finish method, all of these methods, start method, execute method, and finish method, they used to have a communication in between. They used to communicate with each other, and I have shown you this in the diagram. Let me go to that diagram first of all. See, this was the diagram we have taken that time. So during the explanation I told you one thing: these three methods, the start method and then execute method and then finish method, they used to have an intercommunication mechanism. There is something which with these methods used to communicate with each other.
And that is what we are going to learn. Okay, what is that communication method between start, execute and finish method? When I was explaining you this diagram, I told you one thing. देखिए क्या होता है कि start method, it's a responsibility of start method to construct the batches. Whenever this SQL query with database.get query locator method है ना, this is the SQL query. दो तरह से आप fetch करते हो. We already had a discussion regarding this कि these dynamic queries can be executed like database.query method से, but database.query will only going to give you 50,000 result. Whereas if you execute the same query with database.get query locator method, this method is capable to return 50 millions of record. Now all these records, they are fetched from the database. All these records, they are fetched from the database, and they are internally stored inside a memory called as heap memory, one of the temporary memory. Now this is this is the responsibility of start method. First, the very first responsibility is to create the batches. The default size is 200. If you won't mention any size, the size is considered to be 200 records per batch. But then you could mention the size. The minimum you could make it minimum you could the minimum size of batch could be 1, or maximum is 2000 records per batch. That is what the size is. तो सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है स्टार्ट मेथड का? बैचेस को फॉर्म करना. उसके बाद में इट यूज टू डिलीवर बैचेस फ्रॉम फर्स्ट टू द लास्ट to the execute method. Like the first batch will be given to execute method. Execute method will perform the execution. उसके बाद में फिर start method उसको दूसरा method देगा, तीसरा देगा, and this goes on. So one by one, all batches are going to be get executed. And when this whole execution of the batches has been done, so it will going to inform finish method that now I'm done with everything, and now there is no more batches present inside the heap memory. So now you could go ahead and finish this whole process. So obviously there is something, there is some kind of communication mechanism between all these three methods. And one more thing one more thing we have discussed that time. One important question was there. How many times your start method and the finish method and the execute methods are going to be executed? So always remember this question, that start method and the finish method, they will be executed only once. Start method and the finish method, they will be executed only once. They will be executed only once. Whereas your execute method, how many times it's going to be get executed, it all depends how many number of the batches we have into the memory. Now for example, if you have 10 batches into memory, because see, the execution of batch will be always one by one. Simultaneously, two batches are not going to be executed. Execute method will not pick two method or three batches. It will always going to pick one method, one batch at a time. It will always going to execute one batch at a time. So execute method will execute how many times this method execute will going to be get invoked. That all depends how many batches we have into memory. So that means if you have 6 batches, if you have 10 batches, execute method will be executed 6 times, or rather 10 times. And this is, this is one of the most common interview question. How many times start method, finish method and execute method are invoked, or they are executed, whatever. So start and finish, they are invoked only once. They are called only once. Whereas the execute method, it all depends how many batches we are having into the heap memory. The number of the batches is the number of the execution in the execute method. That much of the time execute method is going to be get executed. Okay, so these are few of the common things that we have discussed as an introduction part. We have discussed this whole thing. Now let's understand this format. This is something which is very, 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 very important. They will ask you this to write down in the machine test. They will ask you to open the notepad or some other kind of software. They will ask you to write down this, the format, the syntax of the batch class. There, and I want every one of you to write it down and make this practices. 5 times, 10 times, till the time you won't get grip on this. Just do it. Write it down in the blank pages, and start writing this. Not now, but I'm just telling you to have a practice on this till the time you will get a grip on this. So how is it looks like? First of all, global class and the class name which implements database.batchable of S object. Without implementing database.batchable, you cannot make a class to be act as a batch class. If you want a class to be get converted into a batch class, if you wanted to form a batch class, that class must implement one kind of interface. What is that interface? Database.batchable. Now there are three methods. There are three methods in the batch class: start method, execute method, finish method. And then we were discussing that there is a communication medium. There is a channel
with which these three methods used to have a communication in between. Now let's discuss what is that channel. The channel is also method, and it is database.batchable context. Database.batchable context is that method. Database.batchable context. Database.batchable context is that method. Is that context? I don't know whether you know this word context or not, but context means okay, we used to say that, like, in what context you are saying this, and what is uh how could I explain you that? I mean, we usually ask, if somebody put their opinion about something, and we don't have a similar opinion to that particular person. We used to say him, okay, on what context you are saying this, and then what is that background? What is that you having yourself? What is the evidence that you are holding with you? If you are saying something, do you have any proof? Do you have any evidence that you could make this as a proof? You could make this stand as what you are saying is absolutely right, because what you are saying, I have a different opinion in context to that I have a different opinion about this. So this word context, actually, it used to say that there's a sort of there's a sort of what there's a sort of opinion, there are sort of ideas, and something like this. Here here database is a class. Here database is a class, and then batchable context is the method. This database is a class. Database.batchable, database dot database dot your query, database dot get query locator, or database. I told you there are two most bigger classes. There are two most bigger classes in the Apex. One is system, the second is database. And most of the time, the normal functionality what we are learning, that every method is there into either it's into the database class or it's present into system class. These are the two most used kind of classes. So here, there's a method called as database.batchable context. Database.batchable context. Now, with this method, all three, and all three, start, execute, and finish, they used to have an intercommunication. This is the context. This is the context with which start method, execute method, and finish method used to have a communication in between. That is the reason you will see this database.batchable context as a parameter in all three methods. Database.batchable context. Now you ask me, sir, what is this B context? It's obviously a variable. It's obviously a variable of this particular class. It's almost similar like writing integer num. It's almost similar if you write down, if I write down integer num. Okay. Now what is this num? Num is a variable. Variable of what type? Integer type. Num is what? Num is a variable. Of what type? Integer type. This is what? B context is a variable of what type? Batchable context. Database.batchable context. So this is just an object name, and you could write it here. Something, I mean, apart from B context, you could write anything over. This is something you could define by your own. Okay, A, B, C, X, Y, Z. But try to give this naming convention. I always say that try to give the relevant name, as far as possible. That's why. So you could write down anything over here. It's not like कि आपको हमेशा B context ही लिखना पड़ेगा. No. Either he could write down string one, or sorry, num1, num2, or something like ABC, XYZ, something like this. Whatever you wanted. This is just a variable, nothing else. So all these three methods, start method, execute method, and finish method, they have one common parameter. And that is database.batchable. Database.batchable along with a variable name. For example, database.batchable B context. Here I could take anything, or C context, D context, A context, X context, Y context, something like that. It's not mandatory that even the variable name should also be the same. No. It's not like that. You could give any variable name at any moment. Okay, or anything you could write it over here. But the important concept over here is like these three methods, start method, execute method, and finish method, they used to have an intercommunication between them with the help of database.batchable context.
This is the method which establish a communication channel between all these three methods: start, execute, and finish. The kind of communication channel what they used to have, the kind of intercommunication what they used to have is through this method. And that is the reason, this is the method which is commonly used as a parameter. Now in the start, this is the only parameter. In the finish, this is the only parameter. Execute method, there are two parameters actually. One is database.batchable b content. The second is a list of s object. List of s object, because it used to accept two things. First is database.batchable. The second is list of s object. And you ask me, sir, did we require to learn this all? Yes. Yes. Because this is something which is fixed. We cannot change this format. And every batch class must be written in this way only. In the initially, it looks like to be complicated for everyone. Even for me, for the first time when I learned the batch class, it looks complicated to me also. I mean, one second. So when for the first time I learned this, even it looks complicated to me also. I openly admit this. I mean, I make this confession in front of every one of you. But see, one more thing here I wanted to tell. Later on, when I started writing the batch, first thing what I have done that time, I started writing this format at least 10 to 15 times. अब ये मेरा प्रॉब्लम है, आप लोग के साथ ऐसा नहीं होगा ऑफ कोर्स, बट आई हैव whenever I don't write anything onto paper, I don't actually get the grip on this. Right from the beginning itself, जब मैं अपनी पढ़ाई करता था ना, तब से मेरी यही आदत है. I used to construct my own notes. मैं अपने ही नोट्स बनाता था. जब तक मैं लिखता नहीं था तब तक मुझे याद नहीं होता था. दिस इज समथिंग, अपना अपना तरीका होता है, हर किसी का एक अपना पढ़ने का स्टाइल होता है. तो मैंने क्या किया, इसको ना कम से कम 10 से 15 बार लिखा है इसको कम से कम 10 से 15 बार. उसके बाद में फिर ये मुझे फॉर्मेट पूरी तरह से याद हो गया था. उसके बाद में फिर मुझे अच्छे से याद हो गया था. ठीक है, चलिए. सो और अभी आपके साथ आपको भी यही करना है. इफ यू फॉलो द सेम प्रैक्टिस, तो मुझे तो यकीन है कि आप लोगों को भी ये फॉर्मेट पूरी तरह से याद हो जाएगा. बाकी जो मीनिंग है वो मैं बता ही रहा हूँ. तो स्टार्ट मेथड, एग्जीक्यूट मेथड और फिनिश मेथड, तीनों में एक पैरामीटर है कॉमन, और वो है डेटाबेस डॉट बैचेबल कंटेक्स्ट अलॉन्ग विद द वेरिएबल नेम, आप चाहे जो भी दे दो. एग्जीक्यूट मेथड स्टार्ट में और फिनिश में तो यही एक पैरामीटर है, दूसरा कोई पैरामीटर नहीं है यहाँ पर. इसकी मेथड में कोई पैरामीटर नहीं है सिवाय इसके. एग्जीक्यूट मेथड में दो पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें से पहला पैरामीटर है आपका बैचेबल कंटेक्स्ट, और दूसरा जो पैरामीटर है वो है लिस्ट कलेक्शन. बट लिस्ट ऑफ व्हाट ऑब्जेक्ट? एस ऑब्जेक्ट. लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट, सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट, उसका भी एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है. ठीक है, जैसे यहाँ पर आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया, वैसे यहाँ पर भी एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है. ठीक है, अब आते हैं हम रिटर्न टाइप पे. तो फिनिश मेथड डजंट रिटर्न्स एनीथिंग, execute method doesn't returns anything, and so the return type is void, and so the return type is void. आप इनको ना प्रोसीजर्स बोल सकते हैं. execute is a procedure, finish method is also a procedure, but start method is not a procedure, rather it's a function. और फंक्शन और प्रोसीजर के बीच में बस एक ही डिफरेंस है. देखिए, कहने के लिए दोनों मेथड्स हैं, फंक्शन भी मेथड है, प्रोसीजर भी मेथड है. तो आप वैसे, मैं भी इनको मेथड ही बोल रहा हूँ, स्टार्ट मेथड बोल रहा हूँ, एग्जीक्यूट मेथड बोल रहा हूँ, फिनिश मेथड बोल रहा हूँ. लेकिन थोड़ा सा और प्रिसाइज होकर अगर मुझे बोलना है इसके बारे में, और थोड़ा सा गहराई में जाके बात करना है, तो फिर मैं कहूंगा कि देखिए, बिकॉज execute method doesn't returns anything and the return type is void. Finish method also doesn't returns anything, even the return type of finish method is also void. So any such method whose return type is void, we used to call this as a procedure. Any such method which doesn't returns anything and the return type is void, we used to call that method as to be a procedure. Whereas any method, if it returns something to the calling environment, we call it as to be a function. Your start method is a function because there is a return type database.query locator. Database.query locator. What is this database.query locator? Let me once again open this diagram to show you that. Database.query locator, first of all, is a class. Database.getQueryLocator is a method. I know it's a little bit confusing.
बट यस इफ इट इज लाइक तो हमको तो याद करना ही है. डेटाबेस डॉट क्वेरी and database.getQueryLocator. These are methods. Database.query, database.query. Once again, let me try. That's the reason I'm going very, very slowly, because you probably could get confused. That's the reason I'm taking this very, very slowly, because I know it's a little bit confusing and you could slightly get confused, or slightly you could feel that this is a complicated topic. And because I wanted to, I wanted to override every hurdles, that's the reason, I'm taking it very slowly. वरना मैं 3 दिन इंट्रोडक्शन थोड़ी ना देता हूँ किसी चीज के ऊपर. आज कम से कम तीसरा दिन नहीं है जब मैं सिर्फ आपको, अभी तक एक भी बैच क्लास नहीं लिखी हमने, लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं. सो database.query is a method. कहाँ है, कहाँ, मैं somewhere I have written this. Why I'm not finding? Here, yeah, database.query. This is a method. This method also executes. This method also executes your dynamic query. This method also executes the dynamic query, dynamic SQLs. Dynamic SQLs. This method also executes the dynamic SQL. And database.query also executes the dynamic SQL. Both of them are used to execute dynamic SQL, right? But when you give database, when you put the query into this method, it's going to return you 50,000 record. For the same query, if you use that database.getQueryLocator, this method, it's going to return you 15 millions of record. But always remember one thing. You can only use this database.getQueryLocator method. You can only use it inside the bash program. You can only use this method, database.getQueryLocator. You can only use this method. You can, फिर से सुन लो, you can only use, अभी मैं और प्रिसाइज, अभी और गहराई से जा रहा हूँ. अब मुझे नहीं लगता कि इतना कोई इतना डीप होके बैच प्रोग्रामिंग पढ़ाता हूँ. database.getQueryLocator. database.getQueryLocator. This method can only be used in the batch programming. ये इसका बीटा वर्जन हो गया, हल्का वर्जन. अगर मुझे और टेक्निकली इस चीज पे बात करनी है तो व्हाट आई एम गोइंग टू से इज लाइक कि database.getQueryLocator method, database.getQueryLocator method can only be used inside a class that implements database.batchable interface. database और सुनो, database.getQueryLocator method, database.getQueryLocator method can only be used inside a class. एक ऐसी क्लास के अंदर ही यूज कर सकता हूं मैं, that implemented, which implements database.batchable interface. मतलब जिसने इंप्लीमेंट कर रखा है database.batchable interface, अगर ये इंटरफेस एसोसिएटेड है उस क्लास के साथ which implements database.batchable interface, ऐसी कोई भी क्लास जिसके साथ आपने इंप्लीमेंट कर रखा है database.batchable इंटरफेस को, मतलब वो बैच क्लास है, मतलब वो बैच क्लास है, उसी के अंदर आप ये यूज कर सकते हो. क्या यूज कर सकते हो? database.getQueryLocator. आप उसे नॉर्मल जगह नहीं जा सकते. ठीक है, तो ये फर्क है. तो database.getQueryLocator और database.query के बीच का फर्क अच्छे से पढ़ के रखो. अब एक नई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आज. database.queryLocator, गेट क्वेरी नहीं, गेट क्वेरी नहीं, database.queryLocator. ये क्या है? काफी हद तक सेम नेम है, नेम जो है काफी हद तक सेम है, इसलिए कंफ्यूजन होता है और कुछ नहीं है. आइडियली इसका नाम थोड़ा सा अलग देना चाहिए था अपेक्स में, लेकिन अब नहीं दिया तो मजबूरी है. आप इसकी डेफिनेशन, इसका नाम तो चेंज नहीं कर सकते, तो हमको खुद ही अपने दिमाग में कहना है कुछ कुछ चीजों के तहत इसको सेपरेट कर देना चाहिए. तो database.queryLocator ये क्लास है, और ये क्लास जुड़ी हुई है आपकी स्टार्ट मेथड के साथ. जैसे मैंने कहा ना, स्टार्ट मेथड एक एक बैच को सप्लाई करती है. बैच B1 फिर B2 किसको देता है? एग्जीक्यूट मेथड को, एग्जीक्यूट मेथड को. ठीक है, तो ये जो सप्लाई करने का काम है, बैचेस को आगे बढ़ाने का काम है, वो इस क्लास का काम है. ये क्लास कलेक्ट करता है B1 को, बाद में B2 को, और बाद में B3 को. और ये जो मेथड है, ये जो क्लास है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये एक एक बैच, तब तक जब तक ये आखिरी बैच नहीं आती, तब तक ये एक एक बैच जो है आगे जाके एग्जीक्यूट मेथड को फॉरवर्ड करता जाए. तो ये जो इसका जो रिटर्न टाइप, अगर मैं बोलूं कि इस क्लास का रिटर्न टाइप क्या है, ये क्लास क्या रिटर्न करती है, तो ये रिटर्न करती है बैचेस.
ये रिटर्न करती है बैचेस। अब इसको और जनरलाइज करते हैं। ये क्लास का काम है बैचेस को फॉरवर्ड करना, इसका रिटर्न टाइप है बैच। और जनरलाइज करते हैं और हल्का करते हैं, इसके भी ऊपर के लेवल पे जाते हैं। इसका ऊपर का लेवल, इसके ऊपर के लेवल पे कौन है? स्टार्ट। तो अगर मुझे आपसे ये कहना है कि स्टार्ट मेथड क्या देता है, सारी चीजें भूल जाओ। स्टार्ट मेथड क्या देता है, क्या रिटर्न करता है? अगर आप स्टार्ट मेथड को कॉल करते हो, क्या रिटर्न करता है? बैचेस। कितनी बैचेस? एक बैच। वन बैच एट अ टाइम। वन बैच एट अ टाइम, ये स्टार्ट मेथड का रिटर्न टाइप है। स्टार्ट मेथड क्या रिटर्न करता है? बैचेस। किसको? एग्जीक्यूट मेथड को। ये बैचेस बढ़ाता है आगे, इसका रिटर्न अगर ये एग्जीक्यूट होगा, स्टार्ट मेथड अगर एग्जीक्यूट होगी तो ये क्या देगी बदले में? क्या देगी? बैचेस। एक एक करके बैचेस किसको देगी? एग्जीक्यूट मेथड। इसीलिए स्टार्ट मेथड का रिटर्न टाइप वॉइड नहीं है। स्टार्ट मेथड का जैसे आपके एग्जीक्यूट मेथड का रिटर्न टाइप वॉइड है, फिनिश मेथड का वॉइड है, वो कुछ नहीं देते। लेकिन स्टार्ट मेथड का रिटर्न टाइप है डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर क्लास। इसको आप बैचेस ही समझो। डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर है ना, डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर मतलब ये, डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर मतलब ये, इसको आप बैचेस समझो। बिकॉज ये क्लास इंटरनली बैच को पुल करता है, पुल करता है और बाद में पुश करता है, पुल पुश पुल पुश। तो डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर एक क्लास है, उसको इंटरनली आप बैच ही समझो। इसको अगर कोई निकनेम देना चाहते हो तो बैचेस का नाम दे दो। तो स्टार्ट मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? बैचेस। और इंटरनली कैसे लिखा जाता है? डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर। तो ये है स्टार्ट मेथड का रिटर्न टाइप। बाकी मेथड्स एग्जीक्यूट वो भी वॉइड है, फिनिश मेथड भी वॉइड है। मतलब ये दोनों प्रोसीजर है, लेकिन ये मेथड फंक्शन है। ये मेथड फंक्शन है, इसका रिटर्न टाइप है बैचेस। ये रिटर्न करता है बैचेस, और वो बैचेस आगे चल के किसको मिलती है? ये रिटर्न कर रहा है बैचेस, ये किसको मिल रही है? एग्जीक्यूट मेथड को। एग्जीक्यूट मेथड उसको कलेक्ट कर रहा है लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट में। इसीलिए ये एक एडिशनल पैरामीटर है यहाँ पे, लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट। ये कलेक्ट करता है वहां पे, ये पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है। वो पैरामीटर एक्सेप्ट करने के लिए लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो पूरा फॉर्मेट है ना, इसको सबसे पहले तो आपको याद करना पड़ेगा, ये पूरा फॉर्मेट। और आपको इंटरव्यू में यही लिखना पड़ता है, ये फॉर्मेट, ये आपको इंटरव्यू में लिखना पड़ता है। यहां से लेके यहां तक का, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका मशीन टेस्ट का हिस्सा है। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ राइटिंग अ बैच क्लास। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ राइटिंग अ बैच क्लास। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है इसमें कि हाउ यू विल इन्वोक अ बैच क्लास, आप एक बैच क्लास को इन्वोक कैसे करोगे? ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू इन्वोक अ बैच क्लास। तो यस ऑफ कोर्स वो भी करना है अपने को। तो चलो यहाँ तक हो गया, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक हो गया तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो ये है फॉर्मेट। वी एवरी बैच क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट, वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट इट फॉलोइंग द सेम फॉर्मेट। Global class, class name that implements database.batchable context with an S object. First method will be start method. The second will be execute. The third will be finish. There is one common parameter in every method, and that is database.batchable context. Database.batchable context. Database.batchable context along with a variable name. Your execute method have one more parameter, and that is list of S object along with a variable name. Execute method and finish method, because they are procedures, the return type is void. One more thing is common in everywhere is the global. Access specifier needs to be global for class as well as for all these three methods. Your execute method and finish method doesn't returns you anything, and so the return type is void. Whereas the start method always returns the batches one by one. And to represent that batch, there is a class called as database.queryLocator. Database.queryLocator. So this is the format. Every batch class what we are going to write, we are going to write it in the same way. Now let's discuss how will we invoke, how will you execute a batch class. Because the execution of batch class is slightly different. Execution of a batch class is slightly different. Moreover, the methods, these are not static method. If you remember all of the methods that we have created before this, public, static, void. But here there is no such keyword called as static. None of these method is the static method. No. Start, execute, finish. They are not static methods. If they are not static, I cannot call them directly.
I cannot call them directly because we know this. We have an advantage with the static methods. We know this. Every static method we could directly call it along with the class name. You know this. We have done so many programs. Like if this is a class DML utility, I created a method called as deactivate user. Now I could call this method directly. How? DML utility dot deactivate user with this class, with this function. If it's demanding for any string name, okay, that's a different thing. You could need to pass that parameter to this method. Whenever you're calling this method, you need to pass the parameter. That's a different thing. But how will you call this method? Because it's a static method, we need to call this method along with the class name, dml utility dot deactivate user class. The same thing we have done everywhere. We create a class dml utility, we create a method update hr record. How we call it? dml utility dot update hr records. This is what the benefit with the static method. We can call it directly, but none of your batch class method is static. No, that means there must be some different mechanism. There must be some different mechanisms. Yes, of course, there's a mechanism for that. Whenever I need to invoke a batch class, whenever it's required to call a batch class, how will we invoke? How will you call a batch class? How will we invoke, or rather, how will you execute a batch class? This is also, they ask this in the interview. See, this is also which is important, guys. Every single point right from the beginning of the batch class. What is a batch class? What is the use of a batch class? What is the purpose? What is the advantage? What is the format? Everything is important. I'm telling you one thing. In the asynchronous programming, we are going to cover these 5 topics. Now, out of these 5 topics, the most important one is batch programming. And this is the reason, probably this is my 3rd lecture. Still, I am not able to write down the batch classes. I need to explain so many things for that. That's the reason today is the 3rd day when we are discussing the same thing. It's almost 3 lecture back that I started asynchronous programming. Still, I have not written any batch class because there are so many things that needs to be discussed, and I wanted you to make everything clear. That's the reason. That's the reason. This is the 3rd day. Still, we are discussing the formats and everything related to batch class. This is the most important class in terms of interview. Anyways, so how will we invoke, how will we execute a batch class? We first of all require to create the object. And see, this we have done as a nije pehli baar hai. This we already have done. If I don't make this method as to be static method, if I don't make this method as to be static method, then how will you execute? You will first of all create an object of this class. And with the name of object, you are going to call this. And this we already have done in our initial programming days. If you wanted to revise this, go back in the notes or rather in the video. And then see the initial classes that I have constructed when I haven't make any method as to be static. Then how I used to call this method. What I do in the execute anonymous window, first of all, I'll create an object. I'll create an instance of this class. For example, object 1, DML utility. And how we create this? How we create an object? It was very simple job. How to create an object? First of all, write down this object name, class name. Okay. Then give the object name. For example, obj1 equals to new what? Give again the class name and make it a default constructor. This now with the name of this object 1 in the second line, object 1 dot what? Method name. Object 1 dot method name. This was the process. This was the process that we have followed that time. When a method is not a static method. If the method is not a static method, this was the way to call that method. First of all, create an object of the class, that respective class, and with the name of object name dot method name. But this is what the benefit, whenever you make any method as to be the static method. When you make any method as a static method, it can be called directly. But now we need to, because abhi to static method nahi hai apne paas, then we need to conventionally follow whatever we have followed in the previous sessions. Same thing.
Same thing we need to follow, same convention we are here, we need to implement the same thing. If we wanted to execute a batch class, first of all, create the object of a batch class. How will you create the object? Class name, object name, new, along with the class name, default constructor, and then invoke the batch class. There is a method for that, database.execute batch. database.execute batch along with this object name. ये जो आपने object बनाया ना, वो आपको यहाँ पे रखना है with this. ठीक है, सेम मेथड, बस यही है कि यहाँ पे आपको एक मेथड यूज करनी पड़ता है, अगेन डेटाबेस क्लास, एवरीवेयर डेटाबेस क्लास व्हाट, डॉट एग्जीक्यूट बैच इज द नेम ऑफ मेथड. तो इफ समवन आस्क यू कि हाउ यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द बैच क्लास, देयर इज अ मेथड, डेटाबेस क्लास में एक मेथड है एग्जीक्यूट बैच नाम की मेथड. उस मेथड के अंदर वो ऑब्जेक्ट का नाम देना पड़ता है. किसका ऑब्जेक्ट? बैच क्लास का ऑब्जेक्ट. पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, उसको यहाँ रखो. एंड देन वन लास्ट थिंग, there are two flavors of this, there are two flavors of this, there are two flavors of this. First thing is like it's going to return you the id batch id. मैं बताता हूँ ये क्या होता है. this we are ये मैं बताता हूँ, ये लाइव दिखाऊंगा मैं आपको यहाँ से ना. this I am going to show you live. Here, whenever whenever a batch class is going to be executed, we are going to get an entry over here. Here is something called as apex job id. See, apex job id. तो यहाँ जब भी कोई batch class execute होगी ना, उसकी entry यहाँ पे मिलेगी अपने को. And then we are going to get this id. ये अपने को id मिलेगा. ठीक है, schedule job में मिलेगा कि यहाँ नहीं, यही मिलेगा. यही मिलता है अपेक्स जॉब में. फ्लेक्स क्यू बैकग्राउंड जॉब्स नहीं, यहीं पर ही मिलेगा. ठीक है, कंफर्म कर लेंगे, बट हाँ 100% है कि मेरे को कि यहीं पर ही मिलता है, अपेक्स जॉब में ही मिलता है. तो यहाँ पर एक आईडी रिटर्न होता है. तो जो भी बैच एग्जीक्यूट होती है उसका एक आईडी जनरेट होता है. तो वेन एवर बैच इज एग्जीक्यूटेड विद द मेथड डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट बैच, इट्स गोइंग टू रिटर्न एन आईडी. वो आईडी कलेक्ट करने के लिए अपने को एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है आईडी नाम का. आईडी इटसेल्फ इज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप. डेटा टाइप आपने पढ़े हैं, दो तरह के होते हैं, प्रिमिटिव और एस ऑब्जेक्ट. प्रिमिटिव में क्या आते हैं? आईडी आता है, डेट आता है, इंटीजर आता है, स्ट्रिंग आता है, टाइम आता है, डेट टाइम आता है. दीज आर व्हाट, दीज आर द प्रिमिटिव डेटा टाइप. तो ये एक आईडी, सिंगल आईडी. ऐसा नहीं कि मल्टीपल आईडी होता तो मैं लिस्ट ऑफ आईडी लिखता था. यहाँ पे एक ही आईडी रिटर्न करता है. किसका? जो रिसेंटली बैच एग्जीक्यूट हुई है उसका. तो उसको कलेक्ट करने के लिए हमको एक ही वेरिएबल चाहिए जिसका टाइप है आईडी. अब इसके दो फ्लेवर है, डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट बैच के दो फ्लेवर है. एक तो सिंपल अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्ट नेम, बस. दूसरा है ऑब्जेक्ट नेम, दूसरा है आपका ऑब्जेक्ट नेम अलॉन्ग विद इंटीजर साइज. ये क्या है अलॉन्ग विद इंटीजर साइज? ये क्या है? तो अब सुनो, यहां पे मैंने एक चीज बताई आपको. वी कैन डिसाइड द साइज ऑफ बैच. मिनिमम इट इज 1, मैक्सिमम इट इज 2000. इफ यू डोंट गिव it, the batch size will be 200. The batch size will be 200. So how can you give the batch size? How can you give the batch size? आप दे सकते हो 1 मिनिमम से लेके 2000 तक मैक्सिमम, बट कहाँ देंगे? स्टार्ट, फिनिश, एग्जीक्यूट, कहीं ऐसा प्रोविजन नहीं दिखा. ये सब कुछ वहां नहीं दिखेगा जब आप बैच को एग्जीक्यूट करते हो. एंड वेन एवर यू आर यूजिंग डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट मेथड, उसमें दो फ्लेवर्स होते हैं. एक होता है ये फ्लेवर, दूसरा होता है बैच साइज, इंटीजर बैच साइज. अगर आप ये यूज करते हो तो यहाँ पे डिफॉल्ट बैच साइज इक्वल्स टू हाउ मच? 200. ये अलॉट होता है. और यहाँ पे आपका कस्टम बैच साइज, जो भी आपने दिया है, कस्टम बैच साइज, ठीक है, जिसकी वैल्यू मिनिमम 1 से लेके मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 2000 तक. जो वैल्यू आप दोगे वो वैल्यू डिसाइड होती है. तो दो फ्लेवर है. तो बैच का साइज कहाँ दिया जाता है? स्टार्ट मेथड में नहीं. आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन द इंटरव्यू. मैंने पूछा ये क्वेश्चन, आज ही पूछा. where we will give the size of batch. If I'm executing a batch class, I wanted to give the size of batch as to be 1000 records per batch. This is what the size I wanted to give the batch as a size of 1000.
Where should I give this batch size? In the start method, execute method or finish method? अब मैंने तो confuse किया. What I was asking कि if I wanted to give a size of batch as to be 1000 records per batch, where should I mention this size of batch? In the start method, in the execute method, in the finish method? Actually यहाँ पे है ही नहीं उसका कुछ concept. उसने शायद स्टार्ट मेथड बोला मेरे को याद नहीं आ रहा, बट हाँ प्रोबेबली जिसका इंटरव्यू लिया उसने स्टार्ट मेथड बोला. आंसर ये है ही नहीं इसका. If we wanted to mention the size of batch, this batch size is not there into start, execute and finish. We actually don't mention it over here. Rather, when we invoke the batch class, when we call the batch class, when we execute the batch class, we actually use a method called as database.execute method. With this method only the batch classes can be executed. We call this method, we call this class, we call the execute this batch class with a method called as database.execute method, and you need to mention the size over. If you don't mention it, the default batch size will be 200. But if implicitly you wanted to make it 1000, तो आपको यहाँ पे second parameter 1000 देना पड़ेगा. What is the minimum size you could give? 1. Maximum you could give 2000. So he was supposed to give me this answer कि actually the batch size is not mentioned in start method, execute method and finish method. Rather the batch size is given whenever we invoke. We used to use one method database.execute, and this method when we are invoking the batch class, we use this method, and inside this method we need to give the size, integer batch size, as the second parameter. One second. If he was that much of knowledgeable, 5 साल का एक्सपीरियंस लगा के आया था वो. 5 years एक्सपीरियंस लगवा के आया था. 4 सर्टिफिकेशन, वो 4 सर्टिफिकेशन, 5 साल का एक्सपीरियंस, 8 प्रोजेक्ट. आज का बंदा बता रहा हूं मैं आपको. और मैं यहाँ तो मैंने बहुत बाद में लाया उसको, एडमिन पे ही खत्म हो गया वो, कुछ नहीं. यहाँ तक तो पहुंच ही नहीं पाया मेरे साथ वो. तो बेसिकली दिस इज व्हाट द थिंग, दिस इज व्हाट द थिंग. तो whenever we wanted to give the size, अब उसको तो मैंने घुमा दिया आज. If I wanted to allot the batch size, ऐसा कुछ तो भी similar question I have asked him. I wanted to allot, I wanted to decide, I want something like that. Give the batch size as to be 100 batches, 100 records per batches. Where should I mention that? Start method, execute method, and finish method. I think he has given me start method as the answer. But answer was not. No, we cannot give this size into any of this method. Rather, whenever we execute, whenever we invoke a batch class, we invoke it with the help of one of the method, database.execute batch. And this method, there are 2 parameters. The first one is the object name. The second is the integer. If you give it without, what's going to be happen? The default batch size is going to be allotted 200 records per batch. But if you wanted to customize this size, you wanted your own figure, then you need to give it as a second parameter. ठीक है. और उसके बाद में, हाँ अब देखो, ये देखो आई गया यहाँ पे कि whenever the batches are executed, we won't going to give the output. अपने को नहीं मिलने वाला. We won't going to get the output of any of the batch class, because batches are always executed out of the scope of organization. Then how will we going to track? तो ये देखो अपेक्स जॉब में जाना पड़ता है, जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पर. इसके अलावा कोई हल नहीं है जहां हमको कहीं नहीं पता चलेगा कि बैच एग्जीक्यूट. बिकॉज बैच जब एग्जीक्यूट होगी ना, तो आपको डेवलपर कंसोल पे कुछ नहीं मिलने वाला. बैचेस क्लासेस असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है. दिस इज समथिंग विच इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, समथिंग विच इज गोइंग टू बी गेट एग्जीक्यूटेड आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. उसका आउटपुट आपको डेवलपर कंसोल पे नहीं मिलेगा. हियर वी रिक्वायर टू चेक इट. यहाँ पर आना पड़ेगा अपने को. फिर यहाँ पे जो भी आईडी, जो भी मेथड, जो भी कुछ भी है, कब स्टार्ट हुई है, कब कंप्लीट हुई है, फेलियर्स थे क्या, कुछ कितनी बैचेस प्रोसेस हुई है. जैसे अगर मैं बोलूँ कि 10 बैचेस प्रोसेस हुई है, तो यहाँ पर काउंट आता है 10. टोटल नंबर ऑफ बैचेस कितनी थी, उसमें से कितनी एग्जीक्यूट हुई है, कितनी एग्जीक्यूट हुई, कितने फेल हुई है, जॉब का टाइप क्या आता है, स्टेटस क्या है ना. तो ये स्टेटस भी बता रहा हूँ, अभी वहां तक आ रहा हूँ मैं आपको. स्टेटस पे भी लेके आ रहा हूँ. तो वो सब चीजें हैं अभी. तो जब एक बैच एग्जीक्यूट होती है तो उसका अपना खुद का एक डेटाबेस होता है. छोटी सी जानकारी है बस, एक पॉइंट और पकड़ लो, समझ लो. फिर जब एक बैच एग्जीक्यूट होती है तो पहली बात तो आप उसका रिजल्ट नहीं देख पाओगे, ठीक है, डेवलपर कंसोल पे. लेकिन हाँ, आप उसको अपेक्स जॉब में जाके ट्रैक कर सकते हो. गो टू सेटअप मॉनिटर जॉब एंड अपेक्स जॉब. तो ये अपेक्स जॉब में ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो कुछ भी दिखेगा यहाँ पे, ये सेल्स फोर्स में कहाँ स्टोर होता है. हर चीज के लिए एक ऑब्जेक्ट है सेल्स फोर्स में.
हर चीज के लिए अपना एक ऑब्जेक्ट है। ये सब जो दिख रहा है ना आपको, सबमिटेड, जॉब टाइप, स्टेटस, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? असिंक अपेक्स जॉब ऑब्जेक्ट। और ये जितना भी दिख रहा है, आईडी, स्टेटस, टोटल नंबर ऑफ जॉब्स, जॉब आइटम, प्रोसेस, नंबर ऑफ द एरर्स, किसने बनाया था, क्रिएटेड बाय, ये सारा कहाँ से आ रहा है? एक ऑब्जेक्ट है। मतलब जब बैच एग्जीक्यूट होती है ना, तो उसका रिजल्ट जाके जिस क्लास में स्टोर होता है, जिस ऑब्जेक्ट में स्टोर होता है, उसका नाम है असिंक अपेक्स जॉब। ये ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। असिंक अपेक्स जॉब नाम का एक ऑब्जेक्ट है। असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, असिंक मतलब क्या? असिंक्रोनस अपेक्स जॉब। अपेक्स प्रोग्राम है लेकिन सिंक्रोनस नहीं है। अपेक्स प्रोग्राम है लेकिन सिंक्रोनस नहीं है। और सिर्फ बैच प्रोग्रामिंग ही नहीं, और एक बात बता दूं कि बैच प्रोग्रामिंग ही नहीं, स्केड्यूल प्रोग्रामिंग अगला टॉपिक है। जब स्केड्यूल प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, उसका रिजल्ट भी असिंक में जाता है। फ्यूचर मेथड एग्जीक्यूट होती है, उसका रिजल्ट भी असिंक में जाता है, असिंक अपेक्स जॉब नाम के ऑब्जेक्ट में जाता है। क्वेबल एग्जीक्यूट होता है, उसका भी रिजल्ट असिंक अपेक्स जॉब ऑब्जेक्ट में ही जाता है, क्योंकि ऑल दीज आर असिंक, asynchronous programming, all these are asynchronous operations। इसलिए इसलिए अगर कल चल के इंटरव्यू में कोई पूछे, इफ आई वांटेड टू ट्रैक अ रिजल्ट ऑफ बैच प्रोग्रामिंग, व्हाट कैन आई डू? कैन आई सी द रिजल्ट? नो। Then how will you track the result? You need to say this. You need to say one sentence. Please write it down. This is something which is very important. मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बॉस। और भले ही मेरे को समय लग रहा है, लेकिन ये जरूरी है। आज तक पहला प्रोग्राम नहीं पढ़ा पाया बैच का, लेकिन उसके पहले की जो भी चीज पढ़ा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो if someone asks you this in the interview, how will you track the output of a batch programming, future programming, queuable interfaces? कोई भी नाम ले, कोई भी नाम ले। How will you track the output of a batch program, schedule program, future method, queuable? Flex queues are not methods. Flex queue is something a different concept. It's not a programming. How will you track the output of a batch programming? Second question. How will you track the output of a schedule programming, future method? If it is executed, how will you know the result of a future method? How will you know the result of a queuable method, queuable apex? We need to say there is a standard object for this. Don't worry about the question. There is a standard object inside the Salesforce. There is a standard object for this, not custom. We haven't created anything for this. Salesforce created. There is a standard object for this. What is the name of that? Async, for asynchronous apex job. The name of the object is async apex job. Whenever a batch program executed, or a future method, or a scheduled method, or a queuable interface, the result is going to be stored inside a sync apex job object. And what are the entities? These are the entities. Job type, ये सब आएगा भी, सब आएगा, डोंट वरी। यहाँ लिख के आएगा बैच। अगर मैं बैच प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा ना, तो यहाँ लिख के आएगा बैच। शेड्यूल करूंगा ना, यहाँ लिख के आएगा शेड्यूल। फ्यूचर मेथड करूंगा ना, यहाँ लिख के आएगा फ्यूचर। ये रहेगा जॉब टाइप। व्हाट आर द एंटिटीज? कुछ याद कर लो इसमें थोड़ा बहुत। जॉब टाइप, स्टेटस, टोटल नंबर ऑफ बैचेस प्रोसेस, नंबर ऑफ फेलियर्स, कंप्लीशन डेट, सबमिटेड बाय, अपेक्स जॉब आईडी, व्हाटएवर। कुछ एंटिटीज याद कर लो इसकी बोलने के लिए। सबमिटेड डेट, किसने सबमिट किया, सबमिटेड डेट कब सबमिट किया, कब कंप्लीट हुआ, आज सबमिट किया, आज ही कंप्लीट हो गया, आज सबमिट किया, 3 दिन बाद कंप्लीट हुआ, वो भी बताएगा। तो दिस इज द डेटाबेस, ये डेटाबेस है। अगर ये सारे कॉलम्स नजर आ रहे हैं, तो ये कहां से नजर आ रहे हैं? अरे ये एक टेबल है। एवरी ऑब्जेक्ट इज अ टेबल, एवरी ऑब्जेक्ट, अकाउंट इज अ टेबल, कॉन्टैक्ट इज अ टेबल, हायरिंग मैनेजर इज अ टेबल, एवरी ऑब्जेक्ट इज अ टेबल। दिस इज ऑल्सो अ टेबल, दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। क्या नाम है इस ऑब्जेक्ट का? असिंक अपेक्स जॉब, असिंक अपेक्स जॉब। तो इसके बाद अब ये क्वेश्चन से सारे याद रखो। अब तक मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करके दिए तुमको। हर बैच प्रोग्रामिंग पे अगर ये क्वेश्चन आया, तुम इस टॉपिक तक पहुंचे, तुमको मेरी गारंटी है, मेरे वर्ड्स है कि इसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। ये वर्ड्स है मेरे तुमको। तुम देखना, अगर तुम असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग पे आओगे इंटरव्यू में, तुमको इसके बाहर एक भी क्वेश्चन पूछा तो मेरे को बताना वो क्वेश्चन क्या था। तो whenever a batch program, whenever a future method, whenever a queuable interface, whenever a scheduled program executed,
ये सारा असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है, सिर्फ बैच क्लास की बात नहीं कर रहे हैं। ये सारा असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है, बैच क्लास, फ्यूचर मेथड, क्यूएबल इंटरफेस, शेड्यूल प्रोग्रामिंग, सारा बैच क्लास है। सारा असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है। इसमें से कुछ भी एग्जीक्यूट होगा तो रिजल्ट कहां जाएगा? देयर इज एन स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट फॉर दिस, असिंक अपेक्स जॉब, और उसकी कुछ फील्ड्स याद रख लेना। यहां जाके रिजल्ट देखना पड़ता है। अच्छा, वहां तक पहुंचेंगे कैसे? तो उसके लिए ये है, गो टू सेटअप, गो टू मॉनिटर, गो टू जॉब्स, देयर इज अ लिंक कॉल्ड एज अपेक्स जॉब। जब आप इस लिंक पे क्लिक करते हो ना, तो असिंक अपेक्स जॉब की एंटिटीज यहाँ टेबल के फॉर्म में नजर आती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं पोजीशन पे जाता हूँ, कैंडिडेट पे जाता हूँ, अकाउंट पे जाता हूँ, है। और अगर मैं बोलता हूँ मेरे को दिखाओ इसकी एंटिटीज क्या है, तो ये देखो, ये टेबल के फॉर्म में नजर आता है। ये टेबल, ये कहाँ से आ रहा है? पोजीशन से आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? ये हायरिंग मैनेजर कैंडिडेट से आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? अकाउंट से आ रहा है। ये सब क्या है? ये सब टेबल है। जैसे ये एक टेबल है, वैसे ये भी तो एक टेबल है। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, वैसे ये भी तो एक ऑब्जेक्ट है। जैसे ये ऑब्जेक्ट के अंदर की फील्ड्स हैं, यानी कॉलम है, ये भी तो है। बस इस ऑब्जेक्ट का नाम अलग है, असिंक अपेक्स जॉब नाम है इसका, असिंक अपेक्स जॉब। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल इतना हो गया है, और कल से मैं शायद यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ अब पहला प्रोग्राम। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो, ये 3 लेक्चर जो हुए हैं, ठीक है, ये जो 3 लेक्चर्स हुए हैं, मतलब जहां से मैंने असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी, वो थोड़ा सा आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। बैच प्रोग्रामिंग का ये लेक्चर, लेक्चर नंबर 30, और आज का लेक्चर 31, ये अभी अपलोड कर दूंगा मैं। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे इंटरव्यू से। तुमने इसके आगे में, इसके आगे का अगर कम भी पढ़ा, मतलब प्रैक्टिस की, तो भी चलता है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लेक्चर नंबर 30 और नंबर 31, ये आज का, ये 2 लेक्चर सिर्फ इतना भी पढ़ लिया, सिर्फ इतना भी पढ़ लिया, तो तुम असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग पे क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो अभी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी धीरे धीरे अभी फ्यूचर मेथड और क्यूएबल इंटरफेसेस हो जाएगी, शेड्यूल प्रोग्रामिंग थोड़ा सा और नॉलेज आ जाएगा। बैच प्रोग्रामिंग पे जितना मेरे को चाहिए था वो आज मैंने कंप्लीट कर दिया है, कल मैं एग्जांपल्स लूंगा। अब मैं एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन पे जाऊंगा, लेकिन जितना थियरी मटेरियल चाहिए था वो ये लेक्चर और आज का लेक्चर मिला के हो गया है। अब ये 2 लेक्चर को फॉलो करो, और अपने पूरे इंटरव्यू क्वेश्चन जो जो मैंने बोले हैं, पूरी रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनो, क्वेश्चंस निकालो, आंसर निकालो, क्वेश्चन निकालो, आंसर निकालो, और याद करो। क्वेश्चन निकालो, आंसर निकालो, याद करो। ठीक है, चलो कल से फिर मैं आपको पहला बैच प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ।